Another day and another fight over legacy. BJP now rakes up a fresh controversy, says Hindu king donated land for Aligarh Muslim University. In fact, the BJP has called for his birth anniversary celebrations on the campus. Stage is clearly set for a massive standoff, with the BJP playing the Hindu king card, leaving opposition parties red-faced. The Aligarh Muslim University, one of India's most prestigious educational institutions, founded by Sir Syed Ahmad Khan. But today, after 95 years, the university's existence is under dispute, with the BJP claiming that the land on which this historic structure stands was actually gifted by this Hindu king, Raja Mahendra Pratap. एएमयू को जमीन दान में दी हुई राजा महेंद्र प्रताप का हमेशा उस परिवार का सदस्य को भी एक नियुक्ति रहनी चाहिए उसमें, और उनके नाम से कोई न कोई ऐसा कार्य एएमयू को करना चाहिए जिसका वर्ष में उनके नाम से उसका स्मरण किया जा सके. As the BJP pushes for a controversial celebration outside the gates of AMU, there's just one question that arises: why raise this issue now? यूनिवर्सिटी 1920 में बनी. एमयू कॉलेज का जहाँ तक सवाल है, 1871 और 72 में ये ज़मीन हासिल की गई थी. मेरे ख्याल से उस वक्त राजा महेंद्र प्रताप जी पैदा भी नहीं हुए थे. तो ज़मीन दान देने का, ज़मीन की बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. In a state not new to politics polarization, the BJP's bid being viewed by some as a fresh attempt to fuel passions. अगर एक शैक्षणिक संस्था में रोज़ हम जो है सबकी याद मनाने लगे, सबका फाउंडर डे मनाने लगे, तो ये तो मुल्क के लिए खतरा है कि अब जनरेशन खराब हो, माहौल नहीं रहेगा पढ़ाई लिखाई का. So for this man, the Vice Chancellor of AMU, from being in news for a controversial order to being forced to fall in line by the court to the latest controversy, there's no respite as politics begins to creep at his university gates. Bureau Report, Times Now.